Yeah. So we call this as resource manager. There are two types of resources: primary resources and secondary resources. Primary resources covers basically the processor and primary memory. Secondary memory is not primary resource. Secondary memory is secondary resource. Okay. So these are the computer system components. One is the hardware. This we have discussed here: CPU, memory, input/output devices, controller. Then we have operating system. Then we have application programs, and then we have user. The user is at the highest level, and this hardware is at the lowest level. And in the middle, we have operating system and application programs. The application programs use the services provided by the operating system in order to provide service to the user. So there is a direct relationship from user to the application program to the operating system to the hardware. Okay, this can be considered as different layers, each using the service provided by the other. Now, this is the layered architecture which I was talking about. At the lowest level, I have this computer hardware. At this, there is an operating system. Operating system is basically works an interface between a computer hardware and the system and application programs. This provides us the basic things, basic facilities, and with the help of those facilities, system and application programs provide service to the user. So we can have multiple users using the same hardware and the same operating system if we are talking about a multi-user system. But if it is a single user system, only one user can be active at one point of time. So there are certain utility programs and application programs. These are some utility programs: backup utility, data recovery utility, antivirus software, program uninstaller utility, file compression utility, disk scanner programs, disk defragmenter utility. All these utility programs take benefit of the services provided by the operating system. So, as I told you, there are operating system, there is a resource allocator who is responsible for managing all the resources, whether it is hardware resources or software resources, or primary resources or secondary resources. I told you primary resources are CPU and memory, whereas these secondary resources are IO device and secondary storage. Similarly, we have software resources also, such as files, right? Files are not hardware, but these are also managed by the operating system. So this is one important aspect and important component of the operating system, resource allocation. Then we have control program. This part of the operating system is basically, this controls the execution of user program and operation of IO devices. We need device drivers and we need to control the execution of the user program. One part which is the most essential part of the operating system is the kernel. This program is running at all the times. All the operating system may not be active at all the time, but this kernel is the most essential part of the operating system, and this manages the most important aspect of a system. We will discuss it at some later stage. So I told you that when the first electronic computer was developed, there was no operating system into that, and the manual programming used to be done with the help of a manual operator. But slowly the requirement of the operating system emerged, and the first operating system were
batch processing system, batch processing systems. Okay. Actually, what happened in batch processing system, suppose we have P1, P2, P3, P4, four processes. Okay. If I execute first P1, then P2, then P3, and then P4. Okay. So, but that can be a problem because P1 and P, suppose P1 and P2, P1 and P3 requires the same file F1, whereas P2 and P4 requires another file F2. So first I will load this file F1 and this will be used by P1. But when P2 will come into force, I will have to unload this file and F2 has to be loaded. This is the problem. Then again P2 will come. I have to unload F2 and load F1 again. Then P4 will come. I have to unload F1 and F2 again. But if I do one thing, if I make a batch of P1 and P3 and P2 and P4, then this loading and unloading may be saved. So initial operating system were of the batch processing systems in which the jobs with a similar requirement were grouped together. There was nothing else. Only there was suppose there were 10 systems. These were grouped into batches, maybe 3 or 4 batches, depending upon the input-output requirement by the processes. Right. Then the most important invention in the operating system arena was the multi-programming system. Multi-programming. Initially, you see that there was only two part. There were only two part of the memory. If you see, operating system and user program area. So at any point of time, there can be only one process in the main memory. Okay, and what happened? Suppose that process goes to some input-output purpose. As I told you that every process may require a CPU and input-output. Initially, it will require CPU, then it will require input-output, then again CPU, then again input-output. Okay. When this process goes for, say, there was a process P1, it was executing in the, it was requiring CPU. But when it goes for input-output, the CPU becomes free because there is no other process in the main memory. So the CPU has to wait till this process P1 finishes the input-output and returns back. But input-output devices were very slow at that point of time in comparison to CPU, and that thing is still true. आज भी जो हमारी input-output devices है CPU के comparison में slower है. तो इसका हमने solution ऐसे निकाला कि multi-programming पे आ गए. There are more than one jobs in the main memory at one time, job 1, job 2, job 3, and job 4. These 4 processes, suppose, are in the main memory, right? And this their memory is divided in 2 parts: operating system area and just 1 second, I'm back in minute. So suppose this job 1 was executing and this was using the CPU, and this goes for some input output purpose. So at that time, this job 2 may be given the CPU. This job 2 will be executing the CPU, and CPU will not lie idle because CPU was a very costly resource and there were very few
computers in a large university or in a large organization. So we could not afford to leave the CPU idle. That's why this multi-programming concept was invented. And by multi-programming, we means more than one program may be in the main memory simultaneously. And if one process goes to input-output purpose, the CPU will not be idle, and this can be allocated to some other process in the main memory. Job and process are the synonym we are using for the same purpose. If suppose this job 2 also goes for input output, we can allocate CPU to job 3. Okay, and in the meanwhile, this process may be back from input output to, again it may require CPU, but CPU may not be free, it has to wait in that case. So when we try to apply this multi-programming concept, several things. Any questions? Yeah. So there are several things which need to be, first of all, we have to learn the techniques of memory management, because the memory has to be managed. Secondly, scheduling will come into force. About my channel. Third thing, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बात इधर उधर से आ रही है कहीं से. Third thing, basically we have to consider the protection level also. Because we do not want a job 1 to write in the area of job 2 and job 2 to write in the area of job 3. So all these concepts need to be developed only when multi-programming came into picture. Before that, the operating systems were pretty simple. Batch processing operating system की अगर मैं बात करूं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल आपको डेवलपमेंट करने की जरूरत नहीं थी. ना आपको मेमोरी मैनेजमेंट की इतनी प्रॉब्लम थी, ना आपको प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी थी, ना आपको CPU शेड्यूलिंग की दिक्कत थी. All these concepts, but multi-programming is important because it increases the CPU utilization. CPU मेरा खाली नहीं बैठेगा. एक जॉब अगर इनपुट आउटपुट के लिए गया तो दूसरा जॉब उसको टेक केयर करने के लिए मेरे पास है. So this was the thing which I was telling. Memory management was required. CPU scheduling is required. Now device allocation is also important, because suppose there are 3 jobs. There are 3 jobs: P1, P2, P3. There may be hard disk. So all of them may be requiring this hard disk at the same time. So, but the device controller may be one. So we may allocate the device one by one. So who will be using the device first, and how to handle this type of collision and clash, that is the responsibility of the operating system. So all these concepts need when we have multiple processes in the system simultaneously. Then mainframe systems came into picture, and in that case the time sharing was used. So there was a very large system, and there are various terminals that are associated with this: T1, T2, and Tn. So these are the terminals associated with it, and there were a keyboard and a monitor. These terminals were having a keyboard, a monitor, a network card, and with the help of that network card, these were connected to this mainframe system. The CPU was one, the hard disk was one, and these terminals were using this CPU in a time shared manner. Okay, the CPU time is sliced between between all terminals.
right? So every terminal owner will be thinking that he or she is the sole owner of the system CPU, because the CPU time is sliced in such a manner so that in every few milliseconds the CPU comes back to the a particular terminal. So the user is not aware that other persons are also using this CPU. Okay. So for that purpose, we need several things. First of all, CPU multiplexing was there. Then memory and disk were shared. A job is swapped in and out of the memory from the disk, and we need online system must be available for user to access data and code. Any doubts till now? सर टाइम शेयरिंग में हर जॉब को मतलब अपना अपना काम मिलता है, मतलब वो कुछ सेकंड्स के लिए? हाँ, देखो जैसे मैं बना के दिखाता हूँ सिस्टम। मान लिया पिछली यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये एक सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू बन गया, इसके साथ ये टर्मिनल 1 है, ये टर्मिनल 2 है, ये टर्मिनल n है, राइट? हाँ जी। तो यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है, यूजर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये यहाँ पे मेरे रिसोर्सेज हैं, सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स, सीपीयू एंड रैम and hard disk. All these things are centralized at one place. Okay, and this is a mainframe system. These systems allows up to hundreds of systems were being shared at one point of time. So the keyboard and the monitor is here. Whatever is user typing, whatever program is trying to execute, all these are transferred to this. Okay, with the help of this network. There is a network connection between terminal 1 and terminal 2. So इसको suppose 100 systems है, right? And I give a time slice of 10 milliseconds to each system. So after every 1000 millisecond, I will get back the system back, right? So 10 millisecond is a very big amount for processing, but user के लिए ये बहुत बड़ा amount नहीं है. User को ये लगेगा कि 1 सेकंड में सिस्टम मेरे पास वापस आ गया, ठीक है? तो उसको ये लगेगा, देखो एक तरह से मान के चलो, मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको। इरेजर कहाँ है? अगर ये मान के चलो कि पहले सबसे पहले सिस्टम मिला इसको, कहाँ चले गए? दोबारा बनाना पड़ेगा। ये T1 है, ये T2 है और ये T100 है। सबसे पहले सिस्टम इसको मिला 10 मिलीसेकंड के लिए, इसने अपना जितना काम करना था कर लिया। उसके बाद अगले 10 मिलीसेकंड के लिए सिस्टम इसको मिलेगा, अगले 10 मिलीसेकंड के लिए इसको मिलेगा, अगले 10 मिलीसेकंड के लिए इसको मिलेगा। उसके बाद फिर ये घूम के यहाँ आ जाएगा इसके पास, ठीक है? राउंड रॉबिन टाइप्स, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग टाइम शेयरिंग में ही यूज होती है। अच्छा, ठीक है। और ये पहले जो रेलवे का पूरा सिस्टम था वो माइक्रोवैक्स सिस्टम था, एक माइक्रोवैक्स 2, वो इस तरह के टर्मिनल्स को यूज सपोर्ट करता था। अब तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया है, बट उसमें ये टाइम शेयरिंग ये सारी चीजें अप्लाई होती थी हमारी। तो अब दूसरी चीज पे हम आते हैं पैरेलल सिस्टम पे। अभी तक हम बात ये कर रहे थे कि हमारे पास एक ही सीपीयू है, राइट? बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट when more than one CPU is available to us. So there are two things basically. One is parallel system, and second is distributed systems, right? So we will discuss both of these one by one. So first we will discuss parallel system. Parallel systems are also known as tightly coupled systems. Okay,
there are more than one CPUs, n CPUs है मेरे पास, but all these CPUs are tightly coupled with each other. These are at one place. These are sharing the same memory. They are sharing the same clock. Memory share हो रही है, clock share हो रही है, ठीक है. Communication जो होता है shared memory के through है. अभी इसका diagram के through देखेंगे कैसे ये काम करती है. तो जो हमारे quad core system है, octa core system है, i5 है, i3 है, all these are parallel systems because we are having multiple CPUs available to us, right? Previously it was a luxury, but now at every laptop we have at least 3 or 5 or 7 processors. So all these are tightly coupled. Why they are tightly coupled? Because they are sharing the same memory, they are sharing the same clock, and communication between them takes place through the shared memory. This is not the case in case of the distributed system. We will come to that later on. But one advantages of parallel systems are throughput is increased. These are economical. Reliability is increased. Throughput इसलिए increase हो गया क्योंकि आपके पास अब एक CPU की जगह 4 CPUs अवेलेबल हैं, ठीक है. इकोनॉमिकल इसलिए है कि 4 सिस्टम रखने अगर आपको पड़े अलग अलग सिंगल CPU वाले, तो उसमें हार्ड डिस्क भी आपको अलग रखनी पड़ेगी, रैम भी अलग रखनी पड़ेगी, मॉनिटर कीबोर्ड सब अलग रखना पड़ेगा. रिलायबिलिटी इसलिए बढ़ गई, 4 CPU में से अगर एक CPU आपका फेल हो गया तो कम से कम 3 CPU काम कर रहे हैं, आपका काम नहीं रुकेगा. इसको हम बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. ऑल्दो द परफॉर्मेंस विल बी रिड्यूस्ड, जो काम पहले आप 1 घंटे में कर रहे थे अब हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट में करें, बट ऐसा नहीं है कि आपका काम पूरी तरह से बंद हो जाएगा, राइट. देन वी हैव फेल सॉफ्ट सिस्टम. फेल सॉफ्ट का मतलब ये है कि अगर कुछ फेल्योर भी होती है तो वी आर एबल टू हैंडल दैट. So these are the advantages of parallel systems. हेलो. Yes. सर टाइम ज्यादा क्यों लगेगा इसमें? जैसे बताते थे 1 घंटे से ज्यादा 1 घंटा 20 मिनट भी लग सकता है. नहीं, वो मैंने तब बोला है जब आपके 4 प्रोसेसर में से एक प्रोसेसर फेल हो गया. 4 प्रोसेसर अगर किसी काम को आपके 1 घंटे में कर पा रहे थे, एक प्रोसेसर फेल हो गया तो हो सकता है 1 घंटा 20 मिनट लग जाए या 1 घंटा 10 मिनट लगे. अच्छा ठीक है. एक प्रोसेसर तो फेल हो गया ना, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं. अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर है और वो प्रोसेसर फेल हो गया, फिर तो काम रुक जाएगा पूरी तरह से, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है. तो इस फीचर को हम बोलते हैं ग्रेसफुल डिग्रेडेशन. मतलब शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कम करना अपना, मतलब इज्जत बच गई, काम होता रहा, डिग्रेडेशन हुआ परफॉर्मेंस में, बट वो ग्रेसफुल है. ऐसा नहीं है कि भाई क्या कह देंगे तुम्हारा सिस्टम बंद ही हो गया, तुम्हारा काम बंद हो गया. काम बंद नहीं हुआ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं. सर इसमें क्लॉक का मतलब ये है जो हमारा जॉब स्विच होती है. हाँ सर, इसमें सर क्लॉक का मतलब ये है, मतलब जो हमारी सर जॉब होती है, मतलब स्विच होती है जॉब. नहीं, क्लॉक का मतलब जो आपकी हार्डवेयर क्लॉक है. अब मैं आपको दिखाता हूँ. आपके पास एक हार्डवेयर क्लॉक होती है ना, जो ये देखो इस तरह की, जो ये एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है हर सिस्टम में, जो इस तरह की आपकी डेजिग्नेट पल्स जनरेट करता है, ठीक है. एंड ऑल द सिस्टम्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑल दीज आर डिजिटल सर्किट्स, है ना. और आपने सुना होगा एज ट्रिगर्ड होते हैं और लेवल ट्रिगर्ड होते हैं. एज ट्रिगर्ड एंड लेवल ट्रिगर्ड. तो जनरली जो एज ट्रिगर्ड होते हैं, तो जितने भी ऑपरेशन होंगे वो यहाँ परफॉर्म होंगे राइजिंग एज पे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है. ये राइजिंग एज है, इस राइजिंग एज पे जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा. और आपके प्रोसेसर की जो स्पीड है वो इस क्लॉक के ऊपर डिपेंड करती है. जब मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो प्रोसेसर है वो 3 गीगाहर्ट्ज का है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है 3 × 10⁹ ऑसिलेशंस पर सेकंड करता है, ओके. एंड दैट मींस कि इतने ऑपरेशन, इतने मशीन साइकिल आपने पढ़े होंगे. मशीन साइकिल होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है. हाँ जी. तो इतने मशीन साइकिल मैं 1 सेकंड में 3 × 10⁹ मशीन साइकिल में ऑपरेट कर सकता हूँ. उसमें फिर इंस्ट्रक्शन साइकिल होते हैं. एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितने सारे मशीन साइकिल लगते हैं, ठीक है. तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है
कि अगर यहाँ पे 4 प्रोसेसर आपके हैं, सपोज वी हैव 4 कोर्स, सपोज कोर 1, कोर 2, कोर 3 एंड कोर 4, राइट, एंड बट वी विल हैव अ सिंगल क्लॉक. वही क्लॉक सिग्नल, ये सिग्नल जनरेट हो रहा है ऐसे, यही सिग्नल यहाँ भी फेड हो रहा है इसको, ये सिग्नल इस कोर को भी फेड हो रहा है, ये सिग्नल इस कोर को भी फेड हो रहा है, और यही सिग्नल इस कोर को भी फेड हो रहा है. चारों एक ही क्लॉक सिग्नल से कंट्रोल्ड है, गवर्न है. तो 4 डिफरेंट मशीन साइकिल साइमल्टेनियसली आपके एक्टिव हो रहे हैं. एक C3 का मशीन साइकिल, एक C1 का, एक C2 का और एक C4 का. एक मशीन साइकिल में हम 4 ऑपरेशन साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पा रहे हैं, अलग अलग प्रोसेसर पे और अलग अलग मे बी अलग अलग प्रोसेस पे भी. समझे? हाँ जी सर. अच्छा, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा. मान लिया एक बैंक में 4 आदमी हैं जो कैश कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको अपना कैश जमा करने में मान लिया 40 मिनट्स लगते हैं. अब अगर 4 की जगह 3 आदमी रह जाएंगे तो भी आपका कैश कलेक्ट होता रहेगा. अब हो सकता है 10 मिनट्स की जगह आपको 30 मिनट्स की जगह आपको 50 मिनट्स लगे, ठीक है. बट अगर एक ही आदमी कैश कलेक्ट करने पे हो, उस दिन आप बैंक में कैश जमा करने जाएंगे, आपका कैश जमा नहीं होगा और आप बैंक को गाली देते हुए आएंगे. So these are the parallel systems. There are 2 types of parallel system. One is symmetric multiprocessing and asymmetric multiprocessing. In symmetric multiprocessing, suppose we have P1, P2, P3 and P4. All these processors are equal. No one is bigger, no one is smaller. तो हर प्रोसेस पे एक सेम ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है. Many process can run once without performance deterioration. Performance इसमें deteriorate आपकी नहीं होगी, several process आप एक साथ execute कर सकते हैं. तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग यूज करते हैं. बट एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग में मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट होता है, मास्टर एंड स्लेव. So there is one processor, say P1, who is the master processor, and there are P2, P3, and P4 or n number of processes which are slaves. This is the responsibility of the master to divide and allocate work to the slaves. Okay. So in this case, the master has the responsibility to allocate work to the slave processors, and this is generally used in very large systems. बट जो हम नॉर्मल अपने डेस्कटॉप में पढ़ते हैं वो हम सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग की बात करते हैं, राइट. सो ये हमारी सीपीयूज हैं, ये हमारी मेमोरी है. तो ऑल दीज सीपीयूज आर कनेक्टेड विद द मेमोरी with the system bus, with the help of the system bus, right? And suppose this CPU1, this CPU wants to communicate with this CPU. तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ जो भी इसको मैसेज भेजना है वो यहाँ पे लिख देगा इस मेमोरी में, because this memory is accessible to this CPU also and accessible to this CPU also. This CPU can access the data from this. Okay, यहाँ से access कर लेगा and the communication will take place with the help of this common shared memory. And besides sharing this memory, they share the, as I told you, clock and sometimes hard disks also. Input output devices they can also share. So this is the symmetric multiprocessing. All the processors are similar and can take part in the execution. Then I come to the distributed systems. Distributed systems, these are also used for when more than one CPU is involved.
more than one CPU. But these are independent systems. First of all, these are independent, geographically dispersed, not necessarily that they are in the same place, same room, same building. Sometimes they are even in the different cities or different countries. The geographical location may be different. These are loosely coupled. Okay. Some coupling is required because otherwise they cannot cooperate on a task. और cooperate नहीं कर रहे तो फिर system अलग-अलग ही हो गया, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है. तो इनकी जो characteristics हैं, अगर मैं characteristic यहाँ पे लिखूं, तो पहली चीज तो है कि independent systems, independent, geographically dispersed, right? And collaboration, they need to collaborate. And the communication with, because there is no shared memory, the communication is generally through message passing. Okay, no shared memory or clock, no shared clock. So in distributed systems, we generally have a complete independent system. वो अपना इंडिपेंडेंटली भी कुछ काम करता जा रहा है, बट जब कभी कोलैबोरेशन करने की जरूरत पड़ेगी तो that system is part of a large distributed network. These are known as loosely coupled because the coupling is loose, and that is only through the communication lines, with the help of the communication lines. Advantage है resource sharing. एक बड़ा advantage इसका resource sharing है. We can have a shared database at one place, which is shared by all the offices of the company across the globe. We have computation speed up because we can divide the load between the different components. Third advantage is reliability, because if once we have, suppose, 100 systems connected in a distributed network, if one system fails, 99 are still active. Okay. Communication, obviously this is important because suppose I have a company having offices in all the metros, Delhi, Chennai, Kolkata, Mumbai. Okay. So, and these are connected with the help of some communication network and generates a distributed system. So whenever Delhi office needs to communicate with the Chennai office, it can do with the help of this distributed network. So communication is another important aspect which is required in distributed systems. Right. So distributed system में सबसे important चीज क्या है? एक तो हमें नेटवर्किंग चाहिए. ये LAN से भी कनेक्ट हो सकते हैं, WAN से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्लाइंट सर्वर हो सकते हैं, पीयर टू पीयर हो सकते हैं. What is the difference between client server and peer to peer? In client server, what happens? We have a server and we have multiple clients. And generally there is a request response approach. This client sends a request to the server and server responds, right? There cannot be a generally communication between one client to another client, or client to client communication agar hona bhi hai, so that will be through the server. So that is one aspect. We may have a data server, we may have a file server, print server, where this type of communication is important. We may have a print server where this type of communication is important. But another important category of distributed system is peer-to-peer system, where we have system 1, system 2,
system 3, system 4, and these are connected with the help of some communication network using some topology, and all are equal. There is no any component can connect with any other component if there is a direct communication link. Otherwise, it can use some indirect communication link, right? So this is generally the architecture of the client server. We have a server, and we have a bus topology generally in this case, and the clients are connected with the help of this bus topology and this communication bus. And whenever a client wants to make some request, it will put his request on the bus. It will reach to the server. Server will service the request, generate the response, put the response on the communication bus, which will ultimately reach to the client. We have sometimes clustered systems also. Distributed systems के बहुत सारे और तरीके approaches भी हैं. जैसे अब मैं कहूँ cloud is also one type of distributed systems. Manets, sensor network, WSN is also a distributed system. And sometimes we have a clustered systems also. Clustered systems में क्या है कि we have clusters. Suppose this is one cluster, this is another cluster, and this is another cluster. तो इसमें आपके बहुत सारे systems हैं. Within a cluster, the node can communicate with each other. But whenever we have to perform inter-cluster communication, we select a cluster head, and cluster head can communicate with another cluster head. So this type of clustering is also useful in some situations. Then another important category of systems which is useful and relevant for the operating system purpose is real-time systems. So these are generally used in, you say, embedded systems, robotics, automation, factory automation, and process automation. Okay, so the characteristic of these real-time system is one thing, fixed time constraints, well-defined fixed time constraints. Because a task has to be finished, there are certain deadlines associated with the tasks. And these deadlines are well defined in advance, and these are important for the execution, correct execution of a system. So we can define, there are two types of real-time systems, hard real-time systems and soft real-time systems. In hard real-time systems, basically, if a system is not able to meet deadlines have to be met. Deadlines are necessary to be met. Because if the deadline is not met, some catastrophic failure will be there. And for that purpose, actually your system की deadline miss होने का कारण है उसके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत delay create करती हैं, ठीक है? Because we know the speed of the processor, we know how much instructions are required to perform a task. तो अगर सिर्फ CPU execution हो तो आसानी से काम हो जाता है, but secondary storage बहुत delay करती है. तो इस secondary storage इसमें generally absent रहती है. This is not available generally in case of hard real time systems. और डाटा जो है हमारा ROM में स्टोर होता है जनरली, या फिर जो अब आजकल आपकी राइटेबल ROM आने लगी है,
उसमें, क्योंकि रोम में परमानेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट अगर मुझे कोई डेटा टेम्पररी स्टोर करना है, दैट इज आल्सो स्टोर्ड इन रोम, बिकॉज रैम इज टेम्पररी। रैम को तो स्विच ऑफ करते ही दैट विल बी, बिकॉज रैम इज वॉलेटाइल, RAM is volatile, so I can store my temporary data in this, but where my program will be stored, my program may not be in the hard disk. Normal system में हम क्या करते हैं, hard disk में program रखते हैं, जब उसको execute करना होता है RAM में ले आते हैं, right? But here, because we cannot have hard disk, why we cannot have hard disk in our real-time system? Because the speed of hard disk is several times slower in comparison to the main memory and CPU. So that will create bottleneck and will be risky. कहीं डेडलाइन हार्ड डिस्क की वजह से मेरा मिस ना हो जाए, तो जनरली वी अवॉइड दीज थिंग्स। तो जनरली ये रहता है कि परमानेंट डेटा हम रोम में रखते हैं और टेम्पररी डेटा रैम में रखते हैं, और जब डेटा रोम, जो मेरा प्रोग्राम है वो रोम से रैम में आ जाएगा, एंड एग्जीक्यूशन या रोम से भी एग्जीक्यूशन कर सकता है, क्योंकि रैम एंड रोम, CPU can directly access data from RAM and ROM. That's why these are the part of the primary memory, direct access by the CPU. Right. So टाइम शेयरिंग सिस्टम हम इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय दिक्कत हो जाएगा, और जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और रियल टाइम सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ ए न्यूक्लियर पावर सिस्टम, राइट, and we want to maintain the temperature at suppose degree centigrade, and whenever that this temperature crosses this limit, the AC has to be switched on. If we fail to switch on AC within the stipulated time, this temperature may cross and some chain reaction may start, which will be the catastrophic failure. So we cannot allow to miss that deadline. अगर मुझे within 10 milliseconds AC on कर देना है, जैसे ये मेरी टेम्परेचर की लिमिट क्रॉस हुई, तो that has to be done within 10 milliseconds. So for that purpose we try to keep them simple and we try to achieve the deadlines. However, there is some relaxation in soft real-time systems. Deadlines are important, deadlines are there, but if the system does not meet deadline, catastrophic failure will not happen. आपको पता लगेगा कि परफॉर्मेंस में कुछ कमी आई है, बट आपका ये नहीं होगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ भाई डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बीच में कोई एक दो डेडलाइन मिस भी हो गई, दीज कैन बी अलाउड, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग में एक जगह आपका वीडियो स्ट्रीमिंग है, एक जगह आपकी ऑडियो स्ट्रीमिंग है, ठीक है। जो प्रोसेस ऑडियो स्ट्रीमिंग प्रोसेस कर रहा है, सपोज वो फंस गया कहीं पे, वो वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज नहीं है, इनके दोनों का सिंक्रोनाइजेशन ही ब्रेक होएगा ना, थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो वीडियो के साथ वॉइस मैच नहीं हो रही, बट ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम ही फेल हो गया। ओके, सो इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे चल सकते हैं, और जो हमारे फीचर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। Any doubts till now? Because one part is over. किसी कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी। फिर आगे चलें। आप लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ?
सर सर सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है? सीपीयू शेड्यूलिंग? यस सर। हाँ मैं बताता हूँ, वैसे पूरा चैप्टर है इसका, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ क्या होता है सीपीयू शेड्यूलिंग। देखो जब मैं मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ ना, मल्टी प्रोग्रामिंग में मैं कहता हूँ कि देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस इन द सिस्टम सेम टाइम। ये सपोज P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, 4 प्रोसेस मेरे मेमोरी में है, राइट। और ये पोर्शन मेरा ओएस को है, ये मेरी मेमोरी का लेआउट है। दिस इज वन सीपीयू, राइट। सो बिकॉज आई हैव ओनली वन सीपीयू, एट जितना हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे ना, जनरली सिंगल सीपीयू पे बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें सिंगल सीपीयू पे बात करने का परमिशन देता है। पैरेलल सिस्टम्स की जब हम बात करेंगे तो स्पेसिफिकली करेंगे। नाउ देयर आर 4 systems, 4 processes available for execution, but CPU is one. So in that case we need to schedule किसको एक CPU दें। अभी हमारे पास एक CPU है, 4 प्रोसेसेस है, तो किसको एलोकेट करें। तो उस समय CPU scheduler came into picture, CPU scheduler. Okay, this will apply some algorithm. These are the 4 contender of the CPU, and which will be given the CPU that will be decided by this CPU scheduler, which will execute this CPU scheduling algorithm to decide कि these are the 4 contender और CPU किसको मिलेगा। मान लिया हमने P1 को CPU दे दिया, पहले आया था, चलो इसको हमने पहले CPU दे दिया, राइट। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये एग्जीक्यूट कर रहा है, एग्जीक्यूट करते करते इसको कुछ इनपुट आउटपुट करने के लिए बाहर जाना पड़ा। ये मान लिया आईओ करने के लिए ये बाहर चला गया, अब सीपीयू मेरा फ्री हो गया। अब मेरे पास जो कंटेंडर है वो P2, P3 और P4 है। अब सीपीयू शेड्यूलर फिर पिक्चर में आएगा, वो एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद डिसाइड उसने मान लिया क्या P3 इज द राइट चॉइस, और सीपीयू जो है P3 को दे दिया जाएगा। P3 will now be executing inside the CPU. तो अब जिससे P1 इनपुट आउटपुट करने के लिए गया था, ये फ्री हो गया, मान लिया इसने अपना इनपुट आउटपुट काम फ्री कर लिया, तो ये फिर वापस आ गया। लेकिन तुरंत हम इसको सीपीयू नहीं देंगे, क्योंकि P3 अभी सीपीयू P3 के पास है। ये किसको सीपीयू कब देना है, ये काम सीपीयू शेड्यूलर करता है, ठीक है, और यही पूरा सीपीयू शेड्यूलिंग है। Am I clear? यस सर। सर हाँ सर, इसमें मतलब जैसे मान लो कि सर मेरे पास एक प्रोसेस है, वो सर चला गया सर इनपुट आउटपुट करने, राइट, ठीक है। अब जब वो वापस आएगा तो वो वापस क्या मेरी मेन मेमोरी में जाएगा कि जहां से वो था, मतलब उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी कि अभी जो सीपीयू के पास है उसकी? That depends upon the CPU scheduling algorithm, right? And generally वो एक रेडी क्यू होती है, वो सब डिस्कशन हम सीपीयू शेड्यूलिंग में करेंगे, बट एक रेडी क्यू हमारे पास होती है, वो रेडी क्यू में जाके लगेगा, ठीक है। और प्रोसेस लास्ट तक आते आते अगर हम कर पाए, पहुंच पाए, तो प्रोसेस में डायग्राम भी दिखाऊंगा किस तरह से वो रेडी, रनिंग, वेटिंग 4 स्टेट्स जो होती है उसके हेल्प से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर, थोड़ा वेट करो सीपीयू शेड्यूलिंग की डिटेल में जाने के लिए, ओके। आई विल कम टू दैट, राइट। So this is basically the computer system architecture. If you see, we have a CPU, but there are certain other things. We have memory and a memory controller. With the help of this memory controller, there is a communication between CPU and memory and input output devices. Similarly, we have this controller, print controller, tape drive controller. पुराना जमाना है तो टेप की बात कर रहे हैं अभी हम। These are hardware devices. Okay. पहले क्या होता था कि डिस्क कंट्रोलर का एक अलग कार्ड आता था, प्रिंटर का एक अलग कार्ड आता था, मॉनिटर का एक अलग कार्ड आता था। अब सब आपके मदरबोर्ड पे सारी चीजें इंटीग्रेटेड होके आने लगी, राइट। हमने देखा वो जमाना जब अलग अलग कार्ड आते थे, भाई मैं मॉनिटर खराब हो गया, वो कार्ड निकाल के ले जाते थे, वो रिपेयर करा के ले आते थे, आपको पूरा मदरबोर्ड ही लेके जाना पड़ता है। बट देयर आर सर्टेन हार्डवेयर। फिर उसी तरह से आपको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है, डिवाइस ड्राइवर्स। डिस्क का अपना डिवाइस ड्राइवर होगा, प्रिंटर का अपना अलग डिवाइस ड्राइवर होगा। तो these are the components. We have disks, printers, tape drivers, we have CPU, we have memory, and these are the controller of these resources.
तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन कैसे करता है? एक तो आईओ डिवाइसेस और सीपीयू कॉन्करेंटली काम कर सकती हैं, एक तो ये चीज है। ईच डिवाइस कंट्रोलर अपने आप में एक डिवाइस को कंट्रोल करता है, मतलब ये नहीं है कि प्रिंटर और डिस्क को एक ही डिवाइस कंट्रोलर कर लेगा। डिवाइस डिस्क के लिए अलग कंट्रोलर होगा, प्रिंटर के लिए अलग होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास 2 हार्ड डिस्क हैं, उनके लिए एक डिस्क कंट्रोलर हो सकता है, बट आप ये अज्यूम करें कि डिस्क कंट्रोलर ही आपका प्रिंटर को भी कंट्रोल कर लेगा, नहीं। एक्चुअली ईच डिवाइस इज यूनिक इन इट्स नेचर, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द सीपीयू इलेक्ट्रॉनिक्स। सीपीयू आपकी अगर 5 वोल्ट पे काम कर रही है, तो हो सकता है कि आपकी डिवाइस 12 वोल्ट पे काम कर रही हो या 21 वोल्ट पे काम कर रही हो। इन दैट केस जो वो उनके डिफरेंसेस हैं, उनको कंट्रोल करना वो डिवाइस कंट्रोलर का मेन पार्ट होता है। अच्छा, फिर बफरिंग भी रखता है। बफरिंग इसी भी एडवांटेज है। सीपीयू ने जितना डिवाइस को डेटा भेजना है वो बफर में एक बार स्टोर करके रख दिया, उसके बाद सीपीयू अपना काम करती जा रही है और डिवाइस को डेटा इस बफर से चलता जा रहा है। जो मैंने बोला कि आईओ डिवाइस और सीपीयू कॉन्करेंटली काम कर सकती हैं, वो इस बफर की भी मदद से होता है। सीपीयू डेटा मेन मेमोरी से और डिवाइस के बीच में ट्रांसफर करती है जनरली। सीपीयू की अपनी मेमोरी तो है, इंटरनल मेमोरी रजिस्टर्स हैं, राइट, बट दीज रजिस्टर्स आर वेरी लिमिटेड एंड दीज आर यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पस ओनली। इंटरनल मेमोरी को में जो आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पर्पस होता है, अदरवाइज बाकी सारा डेटा आपका मेन मेमोरी में होगा। तो जनरली जो डेटा ट्रांसफर होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेन मेमोरी के बीच में होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी सीधे ना होकर बफर के थ्रू होता है, मेन मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बफर के थ्रू होता है, राइट। तो इंटरप्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट which helps us in input output operations. Invariably, if you see, generally कोई भी प्रोसेस होगा वो पहले सीपीयू बस चलेगा, फिर आईओ चलेगा, फिर सीपीयू पे जाएगा, फिर आईओ पे जाएगा, फिर सीपीयू पे जाएगा, बिकॉज विदाउट इनपुट आउटपुट प्रोसेस अपने आप में कुछ नहीं है, बिकॉज आउटसाइड इंटरेक्शन जो है वो तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही है ना। अगर कुछ इनपुट लेना है तो कीबोर्ड से लेना है, कुछ आउटपुट लेना है तो मॉनिटर को देना है। तो दिस इंटरेक्शन इज मस्ट एंड दैट इंटरेक्शन हैज टू बी डन एफिशिएंटली। So there are basically 2 things. One is interrupt and another is polling. Generally we go for interrupt, but just I want to tell you polling just for the sake of completion. Suppose there are 10 devices which are connected to this CPU. Okay. So CPU poll करता रहता है कि whenever CPU wants to perform some input output operation, or some process wants to perform some input output operation on behalf of CPU, then in that case अगर interrupt use नहीं कर रहे हैं, हम polling use कर रहे हैं, और generally क्या है कि CPU fast होता है और input output device आपकी slower होती है। तो input output device respond करने में time लगाती है। तो CPU ने request किया input output device के लिए, पहले पूछेगा are you ready, अगर उसका reply आ गया तो डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा आर यू रेडी, थोड़ी देर बाद फिर पूछेगा आर यू रेडी। ये पोलिंग चलती रहेगी, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि सीपीयू को अपना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा बार बार जाके पूछने में, और अगर मेरे पास 100 डिवाइसेस हैं तो 100 डिवाइसेस से बार बार पूछने में सीपीयू का सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टाइम इज बीइंग वेस्टेड इन दिस पोलिंग। दैट्स व्हाई पोलिंग इज नॉट यूज्ड, नॉट प्रिफर्ड, but we go for interrupt generally. How the interrupt works we will discuss. माइक्रोप्रोसेसर वगैरह में आपने पढ़ा होगा डिटेल में, बट यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। So generally interrupt is a signal emitted by hardware or software when a process or an event needs immediate attention. Suppose ये मेरी सीपीयू है, राइट। And these are my devices D1, D2, D3, D10. These are the devices. पोलिंग में तो मुझे सीपीयू को बार बार जाके इनसे पूछना पड़ रहा था आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी,
and that was taking significant amount of time. But इसमें क्या होगा, एक इंटरप्ट सिग्नल होगा, ये सब डिवाइसेस उससे कनेक्ट होंगी, ठीक है, और मान लिया इस डिवाइस को सीपीयू से इंटरेक्ट करना है, तो इस पे ये अपना एड्रेस डाल देगी कि आई वांट टू इंटरेक्ट विद द सीपीयू, और वो सीपीयू को इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू पता लग जाएगा कि दिस डिवाइस वांट्स टू इंटरेक्ट विद मी एंड दिस विल टेक इमीडिएट अटेंशन। और वो अटेंशन किस तरह से लेता है, एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है, राइट। करस्पॉन्डिंग टू ईच डिवाइस वी हैव अ सेपरेट इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ISR 1 मान लिया मेरा D1 को सर्व कर रहा है, ISR 2 मेरा D2 को सर्व कर रहा है, ISR 3 मेरा D3 को सर्व कर रहा है, एंड सो ऑन। तो एक जैसे ही सीपीयू को पता लगेगा कि इंटरप्ट कोई आया है, और उसको ये भी पता लग जाएगा कि किस डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और इसकी डिटेल में अभी जाएंगे। बट दीज इंटरप्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो मेरे जनरेट होते हैं वो डिवाइसेस जनरेट करती हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स मेरे जनरली एक्सेप्शंस होते हैं या एरर्स। ठीक है, कई बार आपने देखोगा डिवाइड बाय जीरो एरर आके प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है। डिवाइड बाय जीरो एक एक्सेप्शन है। illegal opcode is another option, exception. So for that we need to serve। अगर मैं मान लिया यहाँ पे a is equal to b by c कर रहा हूँ, और मान लिया c 0 हो जाता है, तो क्या करेगा, इन्फिनिटी को कैसे स्टोर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम मेरा या प्रोग्राम मेरा, नहीं कर सकता। या मशीन, हर मशीन के अपने एक इंस्ट्रक्शन वो होता है, इंस्ट्रक्शन सेट, कि ये इंस्ट्रक्शन मेरी लीगल है, और हर इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका एक मशीन कोड होता है। अगर वो ऑपकोड इलीगल हो गया, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में इलीगल ऑपकोड एक्सेप्शन जनरेट होता है, और वो प्रोसेस से बाहर निकल के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज यूजर को देना पड़ेगा। तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? सर एक बार दोबारा बता दो इलीगल ऑपकोड। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ इलीगल ऑपकोड। तो मैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की बात कर रहा था, उसमें मैंने एक बताया आपको इलीगल ऑपकोड। देखो, जो मशीन का आपने देखा होगा ना, मशीन का जो ये होता है फॉर्मेट, मशीन इंस्ट्रक्शन का, इंस्ट्रक्शन में जनरली ये होता है ऑपकोड, आपके एड्रेसिंग मोड, और यहां पे आते हैं आपके ऑपरेंड्स। ठीक है, मान लिया मैं 32 बिट मशीन की बात कर रहा हूं, मान लिया मैंने 8 बिट इसको दिया, 4 बिट इसको दिया, और 20 बिट मैंने इसको दिया। 8 बिट में 2 to the power 8